one day at a time. We can accomplish any goal we set for ourselves. There will be obstacles, there will be doubters, there will be mistakes, but with hard work there are no limits. Esteemed Chief Guest Professor Haroon R. Naik, Director Planning and Monitoring, MSME Coordinator, SKUAST Kashmir. Respected Guest of Honor, Associate Director Research, Professor A.H. Mughal. Worthy Dean Faculty of Agriculture, Dr. Rehana Habib Khan. Honorable Heads of Divisions, Professors, and the trainees of the program. I, M. Tariq, a UG second year scholar of this faculty, welcome you all to the conclusion event of the programs we started a few days back. The 1-week advanced ESDP and MDP training programs on vermicomposting technology, a sustainable livelihood option for rural farming community of Kashmir, and making dairy farming a profitable venture by enhancing dairying skills. Sponsored by the Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, New Delhi, organized by Division of Basic Sciences and Humanities, Faculty of Agriculture, SKUAST. This program must have been a success, and the joy of trainees says it all. Firstly, for a formal welcome address and the concluding remarks, I welcome Dr. Malik Asif, the training coordinator of the program, on the dais. Over to you, sir. Thank you, Ayman, host of this event. Well, worthy chief guest of the event, Professor Haroon Rashid Naik, sir, Director Planning and Monitoring, and MSME Coordinator, SKUAST Kashmir. Worthy guest of honor, Professor Rehana Habib Khan, the Dean of the Faculty. Worthy guest of honor, Professor A.H. Mughal, sir, Associate Director Research, SKUAST Kashmir. Respected heads of divisions, professors, colleagues, and dear trainees, a very good morning to all of you. Well, all thanks to Almighty, who has once again enabled us to assemble here with great passion and curiosity to learn and share knowledge. It is indeed a moment of pride to have an opportunity to present welcome address to distinguished guests and audience. Well, it gives me an immense pleasure to welcome the chief guest of the event, Professor Haroon Rashid Naik, sir, my great teacher. He is also the MSME coordinator of SKUAST Kashmir, and he is also looking after as the director research of the university. And I also welcome Professor A.H. Mughal, sir, again my great teacher, who is actually the associate director of SKUAST Kashmir. So besides their busy and tight schedule, they made it to the menu, and their presence, I'm sure they will make the event very, graceful and magnificent. I again, sir, thank you for your great presence in this great event. I also present my cordial welcome to the guest of honor, the worthy Dean of the Faculty, Professor Rehana Habib Khan. Madam, you are actually supporting us and encouraging us in, organizing such great events. So I again thank you for your cooperation and the encouragement. I take the privilege in welcoming HODs, dynamic HODs of this faculty, and dear scientists and colleagues. It is because of their great presence and encouragement that we could organize and conclude these two important training programs sponsored by Ministry of Micro, Medium and Small Enterprises, Government of India. I also welcome media persons. Mr. Shorgar is here, and we have one guy from Gulistan News channel, and the YouTube team. They have been with us from last 1 week, so you are very important for us. So I also welcome you and all the participants who actually has been the main part of this training program during this 7 days period. So before I proceed further, I would
like to give few concluding remarks of these two important training programs which are actually concluding today. One was on vermicomposting technology. This was actually a 7 days program. This was advanced ASDP sponsored by MSME New Delhi, Government of India. So it is concluding today with a great note. And another program we had in the same division, that was on dairy farming. So the coordinator of the program was actually Dr. Manzoor Ah Yatoo. We were also supporting him like co-coordinators or coordinators. So that is also concluding today. So these training programs were actually, both programs were actually organized by Division of Basic Science and Humanities. Sir, during selection process of the candidates, we could receive more than 200 applications in advanced ASDP, because there is a special diagram for this. There is a good funding, almost 10 lakh rupees is there. So people, candidates or these participants prefer to join such programs because there is good access to food and all that. And out of 200, we could, select finally 25, because as per the, the rules and regulations of MSME, so we were supposed to take finally 25. But we took 25 serious candidates, and they were busy with us during this 7 days program. Sometimes, hearing resource persons very keenly, sometimes devoting their time in the laboratories, in the field. And another program was on dairy. There we could receive more than 90 applications actually. And we again took, 25 candidates. They were from different fields. In the first training, that is advanced ASDP on VC technology, that is, we actually try to maintain the diversity of this, candidates in this training program. We selected candidates from different districts. Few were OBCs. We have few candidates in this training program who are from ST background, and there was a good, this distribution in terms of male-female ratio. So we tried our level best to maintain that ratio as well. This was as per the guidelines of the MSME. Again, in the second program, we did the same thing. So far, as the lectures are concerned, we actually took help from eminent speakers from SKUAST Kashmir, having, good expertise in their subjects. They came and delivered their talks. Through brainstorming sessions, we could, to some extent, update the knowledge of the participants. You can yourself see in their feedback. So, by the way, if there is some, something feedback which is going to improve us, you are most welcome in terms of, this boarding, lodging, and everything, because we are new in this field. This is a part of faculty, so one cannot expect that much of facility here. So, we provided free boarding and lodging. Good quality food with good menu was served to the candidates, and we had some brainstorming sessions, like they did their practicals in the laboratories. We took them to biofertilizer unit, to vermicompost unit, and we could arrange a few field trips, like they had been to Manswell, where they could see the biggest model vermicomposting unit. That was actually the aim. The intention was that once they go there, they will see and they will be tempted so that they can replicate this idea back home. So from our side, everything was done nicely, and so far as these lectures are concerned, we had some lectures from Faculty of Agriculture. Apart from the scientists which had interactions with the candidates, we had lectures from the financial institutions like JK Bank, Lead Bank से हमने lectures लिए. Then we had few lectures from the NABARD. Because if someone is, willing to take or adopt some technology and trying to do it commercially, then he or she should at least know what are the bankable schemes available. So we try to get them, and they update your knowledge. This is how it goes. Basically, Dean Madam was also there. She was monitoring, and our HOD, Professor Mushtaq Ah Malik sir, they were also monitoring. So
I once again welcome you all, and I thank all the trainees who has been part of this, this training. If there is some feedback, you can give us at the end, so that it makes really us, to look after the deficiencies which we could make up, isn't it? Thank you very much. Thank you once again. Thank you so much, sir. Now it's time for the felicitation. I request our Dean Faculty of Agriculture to present the token of love and respect to our chief guest, Dr. Harun R. Naik. मैं आपको बताऊं कि इस तरह का ये दूसरा मैं रिसीव कर रहा हूं पिछले एक हफ्ते में, बिकॉज से हो सकता है वो उसका ज़्यादा अच्छा वो बनाया हुआ है। मैं बताऊंगा ना, वो बांग्लादेश वालों का था, बांग्लादेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और मैं तो ये सोच के गया था कि हम शायद इनको अब सिखाएंगे कि हम तो बहुत उड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमसे आगे उड़ रहे हैं। Now I request our Dean Faculty of Agriculture to felicitate our guest of honor, Professor H. Mughal, with the token of love. Guest of honor, Professor H. Mughal, with the token of love. Now I request बहुत गलत चीज है। He's actually president of Miss Seema Jagat and Miss Miss Havia Kausar, Mr. Zakir Ahmed Vanilla, Mr. Muhammad Ismail Tej, Mr. Nasir Qasim, Mr. Mir Shafat Nazir. Sir, he is the man, managing director, UK Mart, Baramulla. Yes, sir. He is producing many organic products. He was recently part of G20, doing a wonderful job in the field. Yes, sir. Yes, sir. बारामूला में स्टॉक बनाने सर जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको प्रोवाइड नहीं करता हूँ जैम बोर्ड जी सर अभी मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ हो गया? She values everything we achieve, appreciates us for what we achieve, and never delays to tell us where we lack. I request our guest of honor, Professor Rehana Habib Khan, to come on the dais for her remarks and views on the training program. Assalamu alaikum. Happy good afternoon to everybody. Oh, good morning. We are delighted to have with us Professor Harun Saab, Director Planning Monitoring, MSME Coordinator, as well as Director Research of SKUAST-K. Professor Arshad Mughal, SJ, Director Research, SKUAST-K. Professor Mushtaq Ah Malik, Head Division of Basic Sciences. Dr. Asif, Organizing Secretary of the 1-week Advanced ESD and MDP Training Program on Vermicomposting Technology and Making. And Dr. Manzoor Ah Yatoo, Dairy Farming and Profitable Venture. All HODs, professors, scientists, trainees and students. It's a great pleasure for me to have the valedictory function of these MSME sponsored training programs, and we are very grateful for Professor Harun Saab, who has guided us in getting at least 66 trainings for our faculty. Because we at this faculty have the main objective of teaching, and then the research and the extension which we carry. But by this these trainings, we had many footfalls beyond the 3 districts we are catering to. So this means that we now get a linkages with all the throughout the valley.
Otherwise, we cater to 3 districts, that is Bandipora, Baramulla and Kupwara. But by these MSME trainings, we got to know about the rural youth, the educated youth who want to be in different who want to take up different agri enterprises as their business units. And the footfall to this university, to this campus has increased by these trainings. We got to know them and they got to know us. That's one of the most important objective of our campus, that we should be known to everybody in the valley. And they should take the advantage of the expertise we have over here, whether it's in the form of technical guidance to be given by our scientists or by the infrastructure we have created over here. And this way, the connection between the graduates from the whole valley who want to take up agriculture as their business venture, whether it is in vermicomposting, whether it's in protected cultivation, whether it is in dairy farming, or any type of agriculture venture that is possible. So because this being the Faculty of Agriculture of India's one of the best universities, we have these things as a mandate that we may be known to everybody, and everybody is most welcome to come over here for the expertise, for the technical guidance that we can provide. So by these MSME trainings, at least we are now known to all over the valley, and we are very happy that we are going to hold the hands of our agripreneurs for their enterprise, for their development, for starting, for founding, or for making their ventures a great success. So we'll be a part of it. So that is why I thank again our director, Dr. Harun Sahab, for encouraging my scientists, my faculty, for getting more and more, because we used to get many phone calls that do submit, and I'm happy that at least we are getting out of the 551, we are getting a good amount at 66, because we have an extremely high load of teaching over here. We have BSc, MSc, PhD, and little staff, minimal staff. So that way 66 is a good number which we can cater to without disturbing our other mandates. So while going through the technical program and the lecture schedule, I got to know that in both the training programs, good scientists have been invited from my faculty, outside our faculty, that's from the main campus or from other research stations, as well as from the other parts of the country. And going through the technical program, we are seeing that each and every component of these enterprises have been touched, so that you must have got a good knowledge of these enterprises. How to start these ventures if you have not started yet, and for those who have started, some level of advanced material was also provided to them, in the sense of the people coming over here with a large experience. So I always say that these programs, we want to have success stories. What we will request to people is to start the venture who have not started, and who have these ventures at a very small scale. They have to upgrade their, by getting upgrading of their skills, they can upgrade their venture. So if you have started, a baseline has to be submitted here, that I am at this level. So the level may be 0, or that level may be 10%. I have a unit, 1 unit. For example, only 1 pit in vermicompost. So after this training, you may be, you should be having 4 or 5 pits. So that is the success. Who has a venture? Who doesn't have a venture, he has to start it. Because otherwise, next year we have to explain to the ministry that how much of success stories, even first to our own coordinator, nodal officer, Professor Harun Sahab, that what has been the success of all the 66 MSMEs which we have done. So if they have been successful, only then we can proceed ahead for skilling more of you. So that is request from my side to you people, that now that you have got the skill, the certificate doesn't have to be in the shelf. It has to be used, because if you proceed for any HADP or loan from government banks or loan from the schemes, CSS schemes or any schemes from Department of Agriculture and all, this certificate will help you there, that you have the skill.
You have the skill, and now you want to open your venture, and they will be able to help you. And most probably you must be having those schemes discussed over there, that what are the schemes in the government which can help you. So this is also one of the objectives, to get awareness. In addition to the skills, we are providing the awareness about the schemes, about the loans, or about the help that can be given by the university or by the government of the UT J&K, or from the central schemes, or from the there are many organizations who are encouraging the startups or the agribusinesses. So by these programs, we want to get this awareness in the rural youth or in the graduates, that there are the schemes, there are the helping hands which can help you starting your own business, be an employer rather than an employee. So I think that thing also must have been taught to you. And with this, I thank all of you, and I would wish you good luck in starting of your own agri enterprises. And you know, both of these trainings are interlinked, like at inaugural we said. When you have a cow, you have a dairy, you have the FIR, you have the cow dung, and that can be converted, value added as vermicompost. People are coming towards organic farming, people want vermicompost. It is that in kitchen gardens we prefer to have vermicompost, and the new concepts of organic farming are coming up, concept of natural farming is coming up. So for these things you need vermicompost. So if you will start it, there's a lot of demand. Like in the inaugural, Dr. Zargar said that there is a lot of demand, and all of that is met by the outside the state. Moreover, if you start a dairy venture, it's very important, because milk is a thing which cannot be substituted by something else. We cannot have synthetic milk. It's better to have the pure milk from our own dairies, to cater to the population which we are having. We have a good amount of people preferring taking milk. So, and in all our teas, beverages, milk is added. So there's nothing like that. People have shifted to green tea. Not much of the population has shifted to green tea or some milkless commodities. Milk is still in very high demand for us. So if you start these two ventures, it will be successful, extremely successful, and I wish you luck for that. Thank you. Program. Here the trainees are the integral part of this event. They came, participated, learned something new and achieved. The event would not have been a success without them, and now their words definitely matter. For the feedback, I would like to firstly call Ms. Akif Zafar. Esteemed guest of honor, Dr. Harun Rashid Naik sir and Dr. A.H. Mughal sir, and our worthy dean, Dr. Rahana Habib Khan, and all the respected scientific staff, training coordinators, and all the trainees present over here. Assalamu alaikum. I am Akif Zafar, one of the trainees from this training program that's going to conclude today. That's on vermicomposting technology. Firstly, I would like to thank to the training coordinator, Dr. Malik Asif Aziz sir, for organizing this insightful training program on vermicomposting technology. I must mention that I was fortunate enough to get a chance to attend this training program. I would truly like to appreciate the knowledge gained and all the engaging sessions. All theory sessions were quite informative and engaging, that greatly added value to our learning experience. We also got exposed to the practical technicalities of vermicomposting technology in different practical sessions, and all of those were very well managed and were clearly explained through practical demonstrations that have definitely added to our knowledge and experience. And I must say, no doubt, these practical guidances have provided us confidence to contribute to the waste management and create a positive impact on environment. And besides all this, we also got insights of different financial assistances as well, available through NABARD and other banking schemes for setting up any new agri enterprise. This has definitely encouraged us to think that we are also having a chance, we are having a possibility at this time as well to start our own enterprise at this stage independently. That seems to be beneficial. And I must say that I am grateful for this inspiring training that has sparked our interest in environmental sustainability, no doubt,
And I would also like to thank again for empowering us with this knowledge and motivation to pursue this entrepreneurial endeavor. And definitely, and we all must be looking forward for organizing more such training programs in future. Thank you so much. Thank you, ma'am. Your feedback says it all. Now I request Mr. Zakir Amin to come on the dais for his feedback. Honorable Chief Guest, worthy Dean, and respected scientific staff, and my dear colleagues and the trainees, Assalamu alaikum and good afternoon to all. I am Zakir Amin, a trainee in this vermicomposting training program. It's my pleasure to provide my feedback regarding the training program. Actually, I belong to a farming family, and back home we usually used to purchase this vermicomposting, these vermicompost for our orchards at the rate of 10-12 rupees per kg. But now, during this training program, I got the knowledge that the actual raw material that is used for the vermicomposting, that's actually in our home itself. All we need is that we get a good quality species of worms, and we get the conditions that are necessary for the to set up a vermicomposting unit, and that's all which is needed for our for the setup of our vermicomposting unit. Lastly, I want to thank all the organizing committee members, particularly the program coordinator Dr. Malik Asif, and the student coordinators, particularly Gausia, Seema and Rakib, and who have helped us during the whole training program and provided us with whatever was needed at a particular time. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now it's time to hear from a young entrepreneur who is a trainee of this program, Mr. Umar Majid Khan. Esteemed Chief Guest, Training Coordinator Dr. Malik Asif Aziz, and other guest members, faculty members and trainees, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's a privilege for me to introduce myself here and to become the part of this training program, which was funded by MSME and was conducted by the SKUAST-K Wadura. ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसकी जो मैं पहले फीडबैक की बात करूंगा, उसके बाद जो इसमें पोटेंशियल है उसकी बात करूंगा इस वेंचर में आपको बिजनेस में आने के लिए. फीडबैक मेरा ये रहा कि मेरे लिए ये खुशकिस्मती थी कि मुझे आसिफ सर ने इस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया. यहाँ पे कुछ लूप फॉल्स मुझे लग रहे थे कि मेरे वेंचर में है, वो चीज़ मुझे यहाँ कवर करने को मिली, उनकी नॉलेज मुझे बेटर मिली. या हम मानसबल गए थे इस चीज़ के लिए, एक्सपोजर टूर के लिए, तो वहाँ पे जो एनकरेज में हुआ वो यूनिट देख के, या वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके साथ एसोसिएट थे, उनके साथ जब मैंने डिस्कशन की कि आपका जो, या मेरे साथ कुछ और भी जो ट्रेनिंग्स हैं आउटसाइड कैंपस थे, तो हमने उनके साथ जब डिस्कस किया तो वो भी इनकरेज हो गई इस चीज़ के लिए कि हम जो ही हमें ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी हम भी अपना वेंचर स्टार्ट करेंगे. उन्होंने ऐसे इनको फैसिलिटेट किया कि इसमें कितना पोटेंशियल है, आपको अर्निंग का भी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी. अगर हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट की, जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है या बनता है तो उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम होती है फिर मार्केट की. तो आप सबके लिए जो भी इसमें इंटरेस्ट है अपना वेंचर डालने के लिए, उसके लिए खुशखबरी है, आप कुछ भी प्रोड्यूस करिए एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वर्मी कंपोस्ट नहीं, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका प्रोड्यूस ले लूंगा और अच्छे मार्केट में अच्छे प्राइस पे ले लूंगा. इसलिए जो भी आप घर पे प्रोड्यूस करिए, जरूरी है कि वर्मी कंपोस्ट. अभी हमारे जो ट्रेनिंग सेशन है ये वर्मी कंपोस्ट में था. वर्मी कंपोस्टिंग के साथ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भी अब जो फोकस कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, या हम भी अब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक ही प्रोड्यूस लें. अब ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तभी पॉसिबल है जब हम पहले इसको अवेलेबल करें लोगों के लिए. जो ऑर्गेनिक चीज़ें, जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट पहले ढूंढना है हमें. जो हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं इसको बायो फोर्टिफाई करेंगे, उसके बाद जब ये अवेलेबल होगा एनफ क्वांटिटी में, तब जाके लोग भी इसकी तरफ ऑर्गेनिक फार्म की तरफ जाएंगे. तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं यहाँ पे एज ट्रेनी आया था. एक्चुअली आई एम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस. It was not possibility of job here. I joined this session only to have my own unit. जहाँ तक नॉलेज की बात थी इस सेशन में,
वो एक्सलेंट था, क्योंकि जो जितने भी बंदे आए थे यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट आए थे, उनका वो प्रैक्टिकल फील्ड अलग था, वो जो नबार्ड थे जो जेके बैंक है उनके स्कीम्स वो बहुत ही एक्सलेंट था, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे एज डीन मैम ने कहा कि ये इसकी कामयाबी तभी पॉसिबल है जब यहाँ इन 25 में कम से कम एक सक्सेसफुल वेंचर खड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी जो एक के पास है मुजीद खान के पास, इनके अलावा जो बाकी 24 में कम से कम अगर किसी एक ने भी यहाँ पे अपना यूनिट खड़ा किया तो इसकी कामयाबी उसी वक्त पॉसिबल होगी। उस कामयाबी के लिए तो जो चाहिए हमें, जितनी भी कोशिश चाहिए थी हमें सीखने के लिए प्रैक्टिकल हिसाब से, थ्योरेटिकल हिसाब से, और थ्योरी तभी पॉसिबल है अब जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जो कैंपस था यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट बादा जो नॉर्थ साउथ साइड का, इस एग्रीकल्चर का जो बैरन लैंड यहाँ पे पॉसिबल बहुत ज़्यादा है इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बैरन लैंड, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो रोल इस वक्त होगा वो इस यूनिवर्सिटी कैंपस का होगा, जो ताकि फार्मर्स को यंग एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करे उस बैरन लैंड को कैसे हम प्रोडक्टिव बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Esteemed Professor Harun Rashid Nayak, Director Planning and Monitoring, Dr. Arshad Hussain Mughal, Director Research, respected Professor Rihana Habib Khan, Dean Faculty of Agriculture, Heads of Division, my dear professors and my fellow trainees. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I, Ayman Rafiq, welcome you all in the validity program of Making Dairy Farming a Profitable Venture by Enhancing Dairy Skills. The training program was not just about dairy entrepreneurship. It gave us the holistic idea about cattle, their management, feed given to them, the scheme implemented by the government. We were also given exposure visit to MLRI Manasbal. I am also thankful to Dr. Asif, coordinator of vermicompost training program, for giving us the knowledge regarding vermicompost, which can act as a subsidiary to dairy farming. Lastly, I want to thank Dr. Manzoor Ah Malik, coordinator of dairy training program, on behalf of all my trainees for his efforts, which added immense value to our overall experience. Thank you everyone for your presence. Jazakallah. Thank you so much everyone. This feedback was very much important. Now, dear audience, if your actions create a legacy that inspires others to dream more, learn more, do more and become more, then you are an excellent leader. And indeed, leadership we had today and for these days had the capacity to translate vision to reality. It's time to hear from our chief guest, Professor Harun R. Nayak. We are much blessed to have you with us today, sir. Now over to sir for his words of wisdom. Dean Faculty of Agriculture, Professor Rihana, Associate Director Research, Professor Arshad Mughal Sahab, Senior Faculty Members, Professor Anwar, Professor Mushtaq, Dr. Mantu, Sajad, अगर मैं सबका नाम लेता गया तो फिर जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल में पहले मैं देखता हूँ मॉर्निंग है, इज आफ्टरनून नाउ। तो हमारे यहाँ आज जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को की बुनियाद रखने में जो अहम लोग थे, उनमें से प्रोफेसर दरगल साहब आज हमारे वहाँ मौजूद हैं। मुझे यहाँ आ जाता है
मुझे भी मालूम है, पहले मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर आसिफ को, डॉक्टर मुश्ताक, डॉक्टर मंजूर, जो पूरी टीम इस पूरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, जो 2 स्किल प्रोग्राम यहाँ पे आज हम अंजाम दे रहे हैं। एक तो डेयरी फार्मिंग में था, दूसरा वर्मी कंपोस्टिंग में। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लिबरल फंडिंग दी। और ये लिबरल फंडिंग एग्रीकल्चर में ऐसा पहली बार हुआ है कि ज़्यादातर वो लोग जो है इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स ये IITs को, IIMs को, NITs को दिए जाते थे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में हमें फंडिंग एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले साल हमारी यूनिवर्सिटी को 66 प्रोग्राम दिए गए, बहुत ही अच्छी तरह अंजाम दिया गया उनको। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, एग्रीकल्चर में स्कोप है, एग्रीकल्चर को या फार्मर को खाली ये नहीं है कि हम इसको सस्टेनेंस पे रखें, इसको इंडस्ट्री कैसे बनाया जाए, क्योंकि पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये पूरा एरिया, यहाँ की आबादी तकरीबन 70% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इंडस्ट्री के लिए क्या हो रहा है, और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो है, मैन्युफैक्चरिंग हब अगर हमें बनना है तो रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर में ही अवेलेबल है। और अगर हम ये कहेंगे कि एग्रीकल्चर में कोई कुछ वेस्ट है, वो कुछ भी नहीं है। वेस्ट तो प्लास्टिक है जो डिग्रेड नहीं होता है, जो भी डिग्रेड होता है वो वेस्ट नहीं है। तो इसमें ये जो 2 ट्रेनिंग्स थी, डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्टिंग की, आपको पता है कि गवर्नमेंट में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद ये चीज आज से 4 साल पहले सोचते थे। उस वक्त मैं भी यही सोचता था कि क्या करेगा नजीर साहब, तो कहते हैं मैं जानता था, क्योंकि मैं 32 साल पहले इस चीज में इन्वॉल्व था, इंडस्ट्री रिलेटेड चीजों को कैसे अपग्रेड किया जाए। लेकिन मुझे ये शक था कि एक ये तो कहता है यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कल्चर है ही नहीं, यहाँ पे लोग MSc करते हैं, BSc करते हैं, PhD करते हैं, वहां से आए, किताबों से पढ़ा, कॉपी पेस्ट, उसके बाद यूनिवर्सिटी में लगा, क्लासरूम की कुर्सी से उठा और बैठ गया दूसरी कुर्सी पे। फर्क है कि इस साइड की कुर्सी अब उस साइड में है, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये मेरे जहन में था। मैं उनके साथ डिस्कस भी करता था। मैंने कहा यार तो चले हो एक ख्वाब लेके, क्या ये हो सकता है? क्योंकि पहले तो हमारी फैकल्टी को तैयार होना चाहिए कि उनको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जो हम पढ़ाते हैं दूसरों की किताब से पढ़ के तीसरे को पढ़ा रहे हैं, अब हम उसको रियलिटी में प्रैक्टिकल वे में कैसे लाएं कि हम इस सब्जेक्ट को, एग्रीकल्चर को, जो कभी कभार हम सोचते थे कि खाली हमें चावल प्रोड्यूस इसलिए करना है, जैसे कश्मीर में अभी भी पानुन बात नहीं आ रहा, इट्स नॉट पानुन बात। हमको देखना है कि एक शू 5,000 रुपये में आप खरीदते हो, वो एयर कंडीशन दुकान में होता है, सुबह वो आ जाता है वो दुकानदार, और वो पहले वो साफ करता है, उस जूते को कपड़ा मारता है, वो चमक देता है, उसके बाद आप उसमें घुसते हो तो ये कितने 5,000 का। लेकिन यहाँ आपका सब्जी वाला कहता है 30 रुपये में किलो है सब्जी, आप बहुत महंगी है। तो इस माइंडसेट को चेंज करना है। और फूड हम खरीद रहे हैं सबसे गंदी जगह जहाँ है, जूता हम खरीद रहे हैं जो सबसे साफ जगह है, जो हमें खाना है वो सबसे गंदा है, जिसको हमें पाँव में पहनना है वो सबसे साफ है।
یہ مائنڈ سیٹ لے کے ہمیں چلنا ہے کہ ہم ایگریکلچر کو لیدر کی طرح, ایک لیپ ٹاپ کی طرح, ایک موبائل کی طرح اس کو انڈسٹری کیسے بنے. یہ میں نے کنونس کیا منسٹری کو. میں نے کہا آپ موبائل کے لیے پیسے دے رہے ہو, لیپ ٹاپ بنانے کے لیے پیسے دے رہے ہو IITs کو, NITs کو, لیکن آپ کا تو یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے ہی نہیں, یہ تو آپ کا سروس سیکٹر ہے. سارے پارٹ ساری دنیا سے آتے ہیں, آپ یہاں اسمبل کر دو اور بول دو یہ ہماری انڈسٹری. آپ کی تو ہے نہیں, انڈسٹری آپ کی ایگریکلچر ہے. 30% ہمارا جو ایگریکلچر میں ہے وہ لاس ہوتا ہے. 30% کے حساب سے تقریباً 1.5 لاکھ کروڑ روپیہ ہر سال وی آر لوزنگ آن دا پوسٹ ہارویسٹ لاسز. اس کے بعد ابھی کی جو ہماری استھتی ہے, آپ جائیے دلی میں, میں ابھی 1 ہفتے پہلے گیا, میں نے دیکھا کشمیر سے تو میں نکلا جہاز میں بیٹھا ہوں, سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک تھا, دلی میں اتنے بادل کیوں ہیں؟ جہاز اتر نہیں پا رہا تھا. دیر واز کمپلیٹ اسموک. فارمرز جو سٹبل ہے وہ جلا رہے تھے, وہ دھواں پورے ہریانہ میں, پنجاب میں, دلی میں کور کیا گیا تھا, کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا نیچے. تو لیکن ایگریکلچر میں کچھ بھی ضائع نہیں ہے, نتھنگ. اب جو 2 ٹریننگز دی گئی ہیں ورمی کمپوسٹ کی اور ڈیری فارم کی, آپ نے, مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کتنے بچے, جتنے جو ادر دین ایگریکلچر کالج واڈورا سے ہیں, اس میں ذرا ہاتھ اٹھائیں, کون کتنے لوگ ہیں؟ تو وہ 9 لوگ ہیں, 9-10 لوگ میں نے دیکھا, تو ٹھیک ہے 50% آلموسٹ ہے. دیکھیے آج کا دو چیزیں, میں پہلے اپنے بچوں کو بولوں گا پھر ان کو بولوں گا جو باہر سے بچے آئے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ٹریننگ ہمیں اس لیے کرنی ہے, چلو ایک سرٹیفکیٹ ایڈ ہو جائے, وہ بھی ٹھیک ہے, بری بات نہیں ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا ایجوکیشن, آج کل ہر ایک کے پاس, کس کے پاس نہیں ہے؟ کشمیر یونیورسٹی بھی تو بچے پروڈیوس کرتے ہیں, ان کے پاس بھی تعلیم ہے. اسلامک یونیورسٹی بھی بچے پروڈیوس کریں, ان کے پاس بھی تعلیم ہے. جموں یونیورسٹی بھی پروڈیوس کرتی ہے, SKUAST-K بھی کرتی ہے. ڈگری کالجوں سے بھی بچے گریجویشن کر کے نکلتے ہیں, اور بہت ساری برانچز ایسے ہیں جہاں آپ بھی اپلائی کرتے ہو. ڈگری کالج بارہمولہ اور سوپور کا بچہ BSc کر کے اسی جاب کے لیے آپ کو کمپیٹ کرتا ہے. تو آپ ان سے مختلف کہاں ہو, مختلف. what is the better quality in you? آج کا دور ہے کہ یہاں آج کوئی آپ کی ڈگری کو نہیں دیکھتا ہے. سرکاری نوکریاں جو ہے آپ دیکھ رہے ہو, میں پچھلے 4 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو پچھلے 20-15 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ سرکاری نوکریاں سکڑ رہی ہیں, پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. اب جب پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے تو ان کو انڈسٹری کو کیا چاہیے؟ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کالج واڈورا سے بچہ ہے, یہ اس کو کولڈ سٹوریج مینیج کرنا ہے, تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ سیکھ کے آیا ہے وہاں سے. تو جب آپ کو کال کریں گے تو آپ انڈسٹری ریڈی گریجویٹس ہونے چاہیے. یہ باقی جو آپ پڑھتے ہو تو ہر کوئی پڑھتا ہے, آپ یہ فرق, آپ ایگریکلچر میں پڑھتے ہو بایولوجی, وہ جنرل باٹنی پڑھتے ہیں, لیکن اپلائی تو ہو جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی اسکلنگ, ایک ہیلپ کرتا ہے آپ کو انڈسٹری ریڈی گریجویٹ بننے کے لیے. کیونکہ فار ایگزامپل یہی یہاں پہ عمر مجید خان کی کمپنی ہے, فرض کرو اس کو آپ میں سے کوئی بندہ چاہے, بولے میں 50,000 روپیہ تنخواہ دوں گا, لیکن ورمی کمپوسٹ کو لک آفٹر کرنا ہے. اب نیچرلی یہ اسی کو دے گا جس کو ورمی کمپوسٹ کے بارے میں کچھ پتا ہوگا. جو بولے گا میں نے PhD کیا لیکن ورمی کمپوسٹ کے بارے میں مجھے کچھ پتا ہے, یہ کیوں لے گا اس کو؟ یہ نہیں لے گا. So skilling has become very important along with your education. ڈگری آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ہے, لیکن زمانہ آنے والا ہے کہ اسکل آپ کو نوکری لینے کے لیے چاہیے. جو باہر سے آئے ہیں other than the faculty, ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیے,
नौकरियों के पीछे कम, बल्कि हमारे बच्चे भी स्टार्टअप हमारे पास, आपको पता है कि स्काई का इंचार्ज हूँ, कास्ट कश्मीर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर। स्टार्टअप में बहुत पैसा है और भी पैसा आएगा। जितने बच्चे हैं जिन्होंने भी हमारे साथ रजिस्टर किया है सबको पैसे मिले हैं। बिग ग्रांट 10 है हमारे पास अभी, वो तकरीबन दैट अमाउंट अराउंड 7 करोड़ रुपीस। मैंने ऐसे लोग बच्चे देखे हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स कई जगहों पे रजिस्टर किए हैं, मेरे साथ भी रजिस्टर किया है, बेंगलोर में भी रजिस्टर किया है, उधर पूना में भी रजिस्टर किया, हर एक से पैसे लिए। वो तो मैं तो आज तक कभी 50 लाख इकट्ठे नहीं गिने, वो तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ गिन रहे हैं, और इधर से पढ़ते भी हैं, ऐसे भी मैंने देखे। स्टार्टअप का जो कल्चर अभी चलाया गया है पूरे इंडिया में इस वक्त है। आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि आपको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, SKUAST इज नॉट गोइंग टू गिव दिस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आती है मिनिस्ट्री ऑफ MSME से। जब ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करने के बाद सारा डेटा हम फीड करेंगे कंप्लीशन का, क्योंकि आपका आधार नंबर लिंक्ड है, आपको अपने अपने आधार नंबर के नाम के हिसाब से वहां से ही सर्टिफिकेट आएगी, वो ऑनलाइन निकलती है। खाली मेरा सिग्नेचर वहां होता है एज नोडल ऑफिसर MSME फॉर जम्मू एंड कश्मीर। उस सर्टिफिकेट के एक तो आप लोगों को क्या फायदा है कि जितनी भी जो लाइसेंस फी है, जिसको ये सर्टिफिकेट है उसको लाइसेंस फी नहीं भरना है। कहीं पे अगर आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पेटेंट फी माफ है। इस तरह के और सारे बहुत एडवांटेजेस हैं। दूसरी बात, आप अगर कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हो, वहां आपको स्किल सर्टिफिकेट बोलते हैं, कोई आपको ठीक है आपके पास है क्या कोई, आप ये सर्टिफिकेट, आप जिसके पास भी MSME का सर्टिफिकेट है वो है, कोई बैंक कोई डिपार्टमेंट उसको मना नहीं कर सकता है फैसिलिटेट करने के, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ लोन हो, इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस। तो आप लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहे, एक 3-4 लोगों को मिलके, हमारे लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग है, आप देख लो कि कल की अगर आपने न्यूज सुनी होगी, मध्य प्रदेश में लोग लाइन में खड़े थे, उनको पिछले 2 महीने से यूरिया नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं और जमाना आने वाला है, मैं हवा में ये बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कुछ भी बनाएगा, वो चाहे बादाम की पैकिंग करे, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट बनाए, SKUAST कश्मीर एक बहुत बड़ा हब बनेगा। ये खाली पढ़ाएगा ही नहीं, बल्कि जितना भी प्रोड्यूस यहाँ की कंपनियां करेंगी उसकी मार्केटिंग भी एक्सपोर्ट के लिए यहाँ से होगी। और ये ऑनरेबल वाइस चांसलर ने रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने MOU किया है लुलू ग्रुप के साथ, और ये खाली एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए है, और SKUAST कश्मीर विल बी द हब फॉर दैट। हमारी तरफ से उनको वो जो सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, वो भी SKUAST की रहेगी। तो आपको मार्केट की परेशानी जो जिसको होगी वो खत्म यहाँ ही होगी, खाली आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो मैं ये जो हमारा यंग लड़का है उमर साहब को अभी इसने लेट्स गिव में बिग हैंड की, उन्होंने ओपन किया कि हम यहाँ पे मैं मार्केटिंग करूँगा। तो मुझे बताइए कितने लोग वर्मी कंपोस्टिंग में वेंचर में आना चाहते हैं, जो अभी इंटरेस्टेड हो वो अपना हाथ खड़ा करे। How many of you are ready? So what we will do, जितने भी लोग हैं ये यहाँ पे नाम लिखाएंगे। डॉक्टर ज़हूर बाबा की लैब में इनको फर्दर ट्रेनिंग रहेगी, which the Directorate of Planning will bear their expenses, और ये इनकी ट्रेनिंग जो भी इससे ज़्यादा, क्योंकि एक हफ्ते में आपको टिडबिट्स मिल जाते हैं, हर कुछ सब कुछ आप सीख नहीं पाते हो। जो फर्दर ट्रेनिंग इसके लिए चाहे, हम यहाँ हमारी जो वर्मी कंपोस्टिंग लैब है, बायो फर्टिलाइजर की लैब, उसके साथ अटैच रखेंगे। आपने मानसबल भी आप गए, मानसबल में आपने देखा होगा, लेकिन वो नहीं है कि हम 200-300 क्विंटल करेंगे। रिक्वायरमेंट तो यहाँ लाखों टन की है, रिक्वायरमेंट इज लाखों टन। अगर कोई भी प्लांट आप में से आता है जो 10,000 टन ही बना दे, वो दैट विल सर्व आवर इकोनॉमी।
اگر آپ بولو گے نہیں 100 ٹن یا 200 کوئنٹل یا 300 کوئنٹل, دیٹ از ناٹ گوئنگ. جتنی بھی یہاں میں نے دیکھی نرسریز جو یہ سری نگر میں کام کرتے ہیں جس کے لیے یہ فلوریکلچر کے ریلیٹڈ, وہاں لوگ ان سے وہ بیگ بھی بولتے خریدتے, وہ ورمی کمپوسٹ دیتے ہیں اور وہ سارا باہر سے آیا ہوتا ہے. وائی وی نیڈ, اگر ہمارے پاس اپنا اسکوپ ہے یہاں پہ تو ہم کیوں باہر سے منگائیں گے؟ پولٹری ہماری ہے, ہم اس میں بھی آگے جا سکتے ہیں. ریسنٹلی 1 ہفتے پہلے میں بنگلہ دیش کی 2 ایگریکلچر یونیورسٹیز کا میں نے دورہ کیا, ان کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی. پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بنگلہ دیش والوں کو یہ پیچھے ہوں گے ہم سے, لیکن میں یہاں کہوں گا کہ وہ ہم سے آگے اس لیے ہے کہ میں گاؤں میں گیا, وہاں پہ چونکہ زیادہ فلڈ ایریا ہے تو پیڈی کلٹیویشن وہ سب سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن وہ خالی دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اونلی پیڈی کلٹیویشن. جس کے پاس 10 کنال زمین ہے اس نے 9 کنال میں پیڈی لگایا ہے, 1 کنال میں فش پانڈ بنایا ہے, اور ہر کوئی فارمر یہ دونوں چیزیں کر رہا ہے. دیکھیں وہ 3 کراپ لیتے ہیں اور فش پانڈ ان کا پورا سال چلتا ہے, 800 روپے کے جی وہاں فش, 2000 میں بھی کے جی. وہ ڈفرنٹ ٹائپس کے فش وہاں گرو کرتے ہیں جس کے جیسے فارمر ہے. اس سے میں نے دیکھا کہ وہاں کے فارمروں کی جو انکم ہے وہ بہت اچھی بڑھ گئی ہے. تو ہم یہاں پہ ابھی بھی وہی دیکھتے ہیں, جو ایپل لگاتا ہے وہ ایپل ہی لگاتا ہے, جو چاول لگاتا ہے وہ لیکن کہیں پر بھی ہم اکنامک کنڈیشنز میں امپرومنٹ کے, فارمر کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں کچھ ڈفرنٹ ایریاز کو ایکسپلور کر کے, تو آپ کو دیکھنا ہے کہ جس میں زیادہ, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں. اور آپ آئیے, وی آر اوپن ود یو, جو بھی اس میں آنا چاہتا ہے وہ آئے یہاں پہ. پچھلی بار ابھی کمرشل فلوریکلچر کی ٹریننگ چل رہی تھی, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے 25 میں سے 12 لوگ جو ہے وہ اس پٹیالہ پہنچ چکے ہیں اسی گروپ میں سے, اور 12 انٹرپرینور خالی فلوریکلچر کی سیڈ پروڈکشن کے لیے یہاں سے کام کر رہے ہیں. ہم نے ان کو مارکیٹ لنک کروایا, ان کو سیڈ کوالٹی پروڈیوس یہاں سے کریں گے. وہ بلب پروڈکشن, یہ جو ٹولپ وغیرہ ہم جاتے ہیں, ایک تو ہم لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اس ٹولپ گارڈن کو دیکھنے کے لیے, لیکن اس کا بلب جو ہے وہ ہم باہر کے ملکوں سے لا رہے ہیں. ان کا بھی یہی کلائمیٹ ہے جہاں سے ہم لاتے ہیں جیسا ہمارا ہے, تو ہم اپنا کیوں نہیں پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ اگر اس میں 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ بلب لگتا ہے وہ ہم اپنا کر سکتے ہیں, اس میں وینچرنگ آ سکتی ہے. تو یہ ٹریننگز ہماری یونیورسٹی اسی لیے مختلف ہے باقیوں سے, کیونکہ ہم خالی تعلیم ڈگریاں نہیں دیتے ہیں, ہم اسکل بھی دیتے ہیں. تو وی شوڈ تھینک آور آنریبل وائس چانسلر ہو ہیز گیون ون ویژن کہ یہ ہمارے بچوں کو آنے والے, وہ پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کو آگے کیسے لیکن اگر آپ ڈگریاں ہی خالی لے کے جائیں گے, تو میں نے بھی تھیسس جب لکھی تھی اسی دن پڑھی تھی جس دن سبمٹ کی تھی, اس کے بعد میں نے دیکھی نہیں. ہر ایک کا یہی حال ہے. تو دس از گڈ, یو شوڈ گیٹ انوالوڈ ان دیز ٹائپ آف ٹریننگ, بٹ دیر شوڈ بی اونلی 50%. 50% should be other than the SKUAST students. اور اگر ابھی اس وقت ہم تقریباً 20,000 لوگوں کو پورے جموں اینڈ کشمیر میں, لکھنؤ پور سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, لداخ میں ہم نے اینڈ کیا ہے, چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. تو 20,000 میں سے اگر میرے کو جموں کشمیر کے 100 بزنس مین نکلتے ہیں بہت بڑے, تو ہمیں کیا چاہیے؟ بہت اچھا ہے. نوکری دوسروں سے مانگنے کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ایک بچہ گریجویشن کرتا ہے, اس کے بعد وہ کسی چپراسی کی پوسٹ پہ اپلائی کرتا ہے, یا وہ کہیں ٹائپسٹ بنتا ہے. آئی ڈونٹ فیل فن. یا تو نوکری ہو, IAS ہو, KAS ہو, گیزٹڈ آفیسر بنے, ٹھیک ہے, سسٹینیبل ہے, لیکن اتنی ڈگریاں کرنے کے بعد اگر اس کے پاس وینچرز ہیں, موقع ہے, بزنس کرنے کے موقع ہیں, that is better to exploit. اس سے وہ خالی اپنا ہی روزگار نہیں. اب جیسے عمر صاحب ہے یہاں پہ, اس کے پاس کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے, کتنوں کو روزگار. اب میں اتنا بڑا ڈائریکٹر بن کے اپنے پیٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہوں. سو وی ہیو ٹو چینج دس مائنڈ سیٹ آف دیٹ غلامی ٹائپ آف مائنڈ سیٹ. اس سے باہر آنا ہے اور ایسے پروگرامز کو آگے لینا ہے. تو خالی ٹریننگ نہیں کرنی ہے, کچھ فزیکلی کر کے دکھانا ہے. تو یہی میری طرف سے تھا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.
Thank you so much, Sai. It's an honor to hear from you. Sometimes it's the journey that teaches you a lot about your destination. We reached to the end of this journey, and indeed, every task of this journey was a great success. Now I request Dr. Manzoor Ah Yatoo, Assistant Professor, Division of Basic Sciences and Humanities, for the vote of thanks. Thank you, Ayman. First of all, warm greetings to all of you, and Assalamu alaikum. I, Dr. Manzoor, on behalf of the Faculty of Agriculture and on behalf of the organizing body of the two training MSME training programs, skill development training programs, extend my warm greetings to Professor Harun Saab, who is esteemed chief guest of the occasion. Professor Harun Saab is also Director of Planning and Monitoring, Director of Research, and was also the Nodal Officer of the MSME training programs. Sir, I thank you for gracing the occasion and making it special. We all know that Professor Harun Saab and Honorable Vice Chancellor have been instrumental in bagging around 550 MSME training programs for this cause, not only getting them, but also facilitating the smooth conduct of all these training programs. Sir, we coordinators of the training programs, thank you for this smooth conduct of these training programs. Your presence has added a value and honor to this occasion. Now, I thank Chief Guest of Honor, Professor Rihanna Habib Kant, who is Dean of this faculty. She is the guiding light to this faculty who sees everything. We thank her for everything. She ensures that looks after all the training events from conception to the completion. She ensures nothing goes wrong and everything is all the purpose is fulfilled. We thank you, ma'am, for seamless facilitation of the trainings, events, and other programs of the faculty. I also thank Professor A.H. Mughal sir, who is Associate Director Research, for gracing this occasion. I also thank Professor Zargar Saab, ex-Dean of this faculty. He has, during his tenure, done a lot for this faculty and for his division. I also thank all heads of the divisions, all the scientific staff from this faculty or from outside stations for gracing this occasion. Sir, you have been a source of encouragement for the coordinators as well as trainees. I thank student coordinators of these training programs because they have been behind the scene working for all the stage shows and facilitating the smooth conduct of the trainings. Thanks to press and media for the coverage of these events and its publicity and its mass dissemination. It's a sort of extension activity which you are doing for dissemination of the knowledge. And special thanks to the YouTube team. They have been recording all the lectures and then broadcasting them online. Thank you for that. Thanks to the canteen for delivering quality meals. I hope there is a lot of scope of improvement in that. And thanks to the estates wing for smooth city of the trainees. And special acknowledgement goes to all the trainees who have been here for us for 1 week. Around 50 trainees we have here. I am sure that thank you for your commitment, learning attitude and sincerity. I am confident that knowledge gained during these training programs will way for brighter future, and I hope that you will establish your own enterprises that will be the success of these training programs and real impact of these training programs. And at last, I thank MSME and all the taxpayers of the country for sponsoring this.